क्या आपको पता है 59% ऑफ द एम्प्लॉइज इन इंडिया राइट नाउ आर नॉट हैप्पी एट देयर वर्क प्लेस। क्या आपको ये पता है कि ऑन एन एवरेज एज पर लिंक्डइन's रिपोर्ट एक एम्प्लॉय हर 2.75 इयर्स में जॉब स्विच करते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक द एनवायरमेंट और दे आर जस्ट फिगरिंग आउट कि उनको लाइफ में करना क्या है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? व्हाई आर पीपल नॉट एबल टू फिगर आउट कि व्हाट दे वांट टू डू अल्टीमेटली, और व्हाई आर पीपल नॉट एबल टू फाइंड अ करियर पाथ दैट दे आर मोस्ट पैशनेट अबाउट? इफ यू लुक एट माय जर्नी आल्सो राइट, मैंने आर्टिकलशिप की थी ऑडिटिंग में, टैक्सेशन में एंड वैल्यूएशंस में। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग एट आदित्य बिरला ग्रुप। आई वर्कड एट कॉर्पोरेट फाइनेंस डिपार्टमेंट। आई वर्कड इन कॉर्पोरेट इकोनॉमिक्स सेल व्हिच वाज लाइक द थिंक टैंक ऑफ आदित्य बिरला ग्रुप। आई आल्सो वर्कड इन आदित्य बिरला वेंचर्स व्हिच इज द वेंचर कैपिटल फंड, एंड आई आल्सो वर्कड इन अ सेल्स रोल इन लुई फिलिप। I also became a content creator on social media, on YouTube, Instagram and LinkedIn primarily, and after that I also started my own company KAGR, which is an edtech company in finance upskilling. I still don't feel that this is the only thing for me, right? मतलब इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद I have decided कि ओके ये क्या करना है। I don't even know कि ओके मैं यही करूंगा अगले 5 साल 10 साल, या is there anything new for me as well? The point is pretty simple कि मैंने बहुत सारे चीजें एक्सपेरिमेंट किए and then finally I decided कि क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, and after a point in time you get to know once you start doing that thing ultimately. So in this video we are going to discuss how do you find the career path for yourself and how do you find the career that you are going to love after a point in time. The first advice that I'd like to give all of you is that focus on task over title. Problem क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि वो टाइटल्स पे फोकस करते हैं, डेजिग्नेशंस पे फोकस करते हैं। They run behind कि ओके मुझे क्या डेजिग्नेशन मिल रहा है, whether I am becoming like a CXO of the company, whether I am having some VP level designation, AVP level designation, etc. मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे कंपनीज में डेजिग्नेशन डायरेक्टर का होता है, बट ये डायरेक्टर्स एक्चुअली डायरेक्टर्स नहीं होते कंपनीज में। दे आर जस्ट मैनेजिंग सम एकेडमिक अफेयर्स ऑफ द कंपनी और दे आर जस्ट मैनेजिंग सम ऑपरेशंस पार्ट ऑफ द कंपनी। द रीजन ऑफ दिस डेजिग्नेशंस इज बिकॉज पीपल आर फोकसिंग ऑन टाइटल्स ओवर टास्क, व्हिच इज नॉट समथिंग दैट नीड्स टू हैपन। टास्क जो दिया जाता है राइट, दैट इज समथिंग व्हिच यू नीड टू फोकस ऑन। इवन इफ लेट्स से यू आर अ सेल्स मैनेजर इन अ कंपनी और अ कंटेंट मैनेजर इन अ कंपनी, आपको जो टास्क दिया है अगर आपको वो पसंद आ रहा है, irrespective of what designation you are being given, you will definitely enjoy that particular task. For example, मैंने ITC लिमिटेड का इंटरव्यू दिया था। इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट में my designation was internal audit manager. कॉर्पोरेट फाइनेंस के डिपार्टमेंट में वहां पर my designation was going to be a corporate finance analyst. मैं खुद की भी बात करूं राइट पर्सनली, तो मुझे कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिस्ट सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था, पर बाद में जाके पता चला कि यहाँ पर भी काम तो एक नॉर्मल डेटा एंट्री का ही है, डेटा एनालिस्ट का ही है, और इसमें भी कुछ इतना ज्यादा लुक्रेटिव काम नहीं है। तो द फर्स्ट एडवाइस इज दैट डोंट फोकस ऑन designations, focus more on tasks. Psychological studies have also found that people who look at titles and not the day-to-day tasks are more unsatisfied, and people who love the day-to-day tasks tend to be more successful in their careers. This connects back to pixel theory, right? That we might think of our life in a macro perspective, but our happiness actually lies in the day-to-day small tasks. कोई भी एक बंदा है अगर उसको CEO बनना है राइट, तो मैक्रो पर्सपेक्टिव के बारे में सोचते कि ओके मैं CEO अगर बन गया तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, मेरी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। बट व्हाट अबाउट द लॉन्ग वर्किंग आवर्स, बट व्हाट अबाउट द sacrifice of personal life etc. everything comes at a cost, right? जो माइक्रो चीजें होती है जो आपको खुशियां दिलाती है उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए rather than looking at the macro perspective which is there. The second theory is about the great search mindset. This is a theory by Dr. Grace Lardon. She's a behavioral scientist and she coined this method in her book called as Think Big. All you need to do is write down what activities you enjoy on a piece of paper and then just see what you're doing things day to day you find fun plus the things that are moving closer to those activities. जैसे मैंने शुरू किया था मेरा करियर, तो आर्टिकलशिप के टाइम I was very interested in the field of finance as a topic. इसलिए मेरे SFM subject which is strategic financial management और cost accounting were the favorite subjects. I used to like doing that. I used to like studying a lot and that's why I was very passionate about doing that thing. I started studying for my CA finals. I tried to figure out a way that would help me become an expert in that field and I loved doing that thing because I knew कि इसका outcome बहुत अच्छे से मिलने वाला है मुझे. That's why I started off with that. Talk about the next thing, right? I joined my corporate job and then I realized that okay, job is not something for me and then I realized I have to do entrepreneurship. अगर आप phases देखोगे तो बहुत सारे आर्टिकलशिप में you are doing something else, corporate job में I was doing something else, parallelly I started content creation on YouTube, Instagram, LinkedIn. इसमें भी डिवाइड करूँ तो YouTube अलग है, Instagram अलग है, LinkedIn अलग है. Entrepreneurship is something else where I started my own edtech company. तो बहुत सारे अलग अलग phases हुए. All I'm trying to say is that इतने सारे trial and error करने के बाद I realized कि okay मुझे क्या करना है. So this theory which is the great search mindset is that I list down on a piece of paper मुझे exactly करना क्या है. Number 1 priority is let's say doing a job at Aditya Birla Group. Number 2 would be let's say content creation. Number 3 would be focusing on my CFA academics as well. जो भी मुझे सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट देगा आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम, माय प्रायोरिटी वुड चेंज अकॉर्डिंगली कि ओके मुझे वो चीज पे ज्यादा ध्यान देना है. अल्टीमेटली जॉब करने के साथ साथ मेरा सेटिस्फैक्शन कम हो रहा था, एंजॉयमेंट कम हो रहा था, उसको नीचे प्रायोरिटी पे चला गया एंड मोर सेटिस्फैक्शन वाज इन कंटेंट क्रिएशन, डूइंग समथिंग ऑफ माय ओन, एंड वो ऊपर के प्रायोरिटी लिस्ट पे चला गया. राइट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर आज भी कि आपको क्या करना डेली पसंद है एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रीऑर्डर दीस प्रायोरिटीज जो भी आपको लगता है ये चीज करने में ज्यादा मजा आ रहा है. एंड द
थर्ड थियरी इज द ओडिसी प्लान. दिस इज कॉइन्ड बाय अ स्टैनफोर्ड डायरेक्टर बाय द वे. इसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से. राइट आउट इन डिटेल व्हाट वुड योर लाइफ लुक लाइक 5 years डाउन द लाइन इफ यू कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग. फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, अगर आज मैं खुद का धंधा चला रहा हूँ, राइट, 5 साल बाद वेयर वुड आई सी माई सेल्फ, और मे बी क्या होगा मेरे साथ अगर मैं यही चीज करता जाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं लिखूंगा कि ओके 5 years डाउन द लाइन मुझे पता है कि ओके मेरे इतने फॉलोअर्स हो गया, इतने सब्सक्राइबर्स हो गया ऑन सोशल मीडिया, एंड आई टॉक कंटेंट मोर अबाउट पॉडकास्टिंग, मोर अबाउट लेट्स से जनरल इकोनॉमी, मोर अबाउट करंट अफेयर्स एटसेट्रा. एंड इन माय edtech startup I'll upskill people and make them job ready and place them in some best companies of the world in relation to finance. The second thing is that you have to write out in detail what your life would look like 5 years from now if you do something completely different or if you took a completely different path. For example, let's say in my case, अगर मैं completely different path ले लेता, for example मैं अगर जॉब में ही चला जाता and मैं कॉर्पोरेट जॉब में ही अगले 5 साल 10 साल 15 साल रहता, तो मेरी लाइफ कैसी होती. तो उसमें मैं ये लिखता कि okay I would then focus more on let's say getting a promotion, I would let's say focus more on doing the work on time within deadlines, I would focus more on कि let's say कि मैं कैसे प्रायोरिटाइज कर सकता हूँ मेरे टाइम को, जहाँ पर वीकेंड्स पे मुझे टाइम मिल जाए फैमिली टाइम के साथ, वीकडेज पे मैं जॉब कर रहा हूँ एटसेट्रा. एंड मैं क्या लेवल तक पहुंच सकता हूँ या कहाँ तक मैं पहुंच सकता हूँ इन माय कॉर्पोरेट जॉब. दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड हैव मे बी रिटन डाउन इफ लेट्स से आई वुड हैव टेकन अ कंप्लीटली डिफरेंट पाथ. सो इससे मुझे ये रियलाइज हो गया कि ओके क्या 5 साल बाद मेरा लाइफ कैसा होगा अगर मैंने पूरा जॉब लाइफ ही अगर मैंने एक्सप्लोर किया तो. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज दैट राइट आउट इन डिटेल व्हाट वुड योर लाइफ लुक लाइक 5 years from now if money, social obligations and what people would think about you were all irrelevant. अगर आपको लेट्स से पैसा बॉदर नहीं कर रहा है, कोई सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं है आपके लाइफ में, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, एंड लेट्स से व्हाट सोसाइटी थिंक्स अबाउट यू आपको मैटर ही नहीं करता है, तो 5 साल बाद व्हाट योर लाइफ वुड लुक लाइक आपको इसका आंसर देना है. तो अगर मैं होता ये केस में, आई वुड हैव जस्ट गॉन ऑन अ वर्ल्ड टूर, और लेट्स से मैं कोई आइलैंड पे जाके मतलब आई वुड हैव स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ. अगर कुछ भी ऑब्लिगेशंस नहीं है तो कुछ पैसा की प्रॉब्लम नहीं है एटसेट्रा. आई वुड हैव फोकस्ड मोर ऑन माय पैशन प्रोजेक्ट्स. लेट्स से आई लव ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, लेट्स से आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव ऑर्गेनाइजिंग क्रिकेट टूर्नामेंट्स एटसेट्रा. तो जो भी चीजें मुझे बहुत मजा देती है वो करने में, मैं वही सारी चीजें करता था. बकेट लिस्ट में मैंने बनाया हुआ है कि क्या क्या मुझे करना है लाइफ के एंड तक. सो आई वुड हैव फोकस्ड ओनली ऑन डूइंग दोस थिंग्स. सो द पॉइंट इज कि ये तीनों क्वेश्चंस का आंसर अगर आप डिटेल में लिखोगे राइट, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आप जो आज चीज कर रहे हो उसके 5 साल बाद जो आपको चाहिए, अगर आपको वो लाइफ पसंद नहीं है, देन आप प्लंज ले सकते हो दूसरी चीज पे. तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि अगर मैं कोई दूसरा पाथ लेता और वो मुझे पसंद आता, तो आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम फर्स्ट पार्ट टू द सेकंड पार्ट. सो बेसिकली द थियरी इज वेरी सिंपल दैट आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन, एंड ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड अ टाइम इन योर लाइफ कि आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम वन करियर पॉइंट टू अनदर. सो लेट्स अप्लाई ऑल दीज थिंग्स टू आवर करियर चॉइसेस एज वेल. बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, मुझे हमेशा पूछते हैं कि मुझे फाइनेंस में जाना चाहिए, ऑडिटिंग करना चाहिए, टैक्सेशन करना चाहिए. अगर फाइनेंस भी तो फाइनेंस में क्या करना चाहिए, वैल्यूएशंस है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, ड्यू डिलिजेंस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है. तो सबसे इजी आंसर टू गेटिंग व्हाट करियर चॉइस इज सुटेबल फॉर यू इज कि एक्सपेरिमेंट करो. 2-3 महीने हर एक करियर चॉइस में डालो. लेट्स से इफ यू आर डूइंग आर्टिकलशिप, ट्राई टू डू आर्टिकलशिप जहां पर आपको अलग अलग चीजों का एक्सपेरिमेंट और नॉलेज मिल रहा है. इफ यू आर डूइंग अ फुल टाइम जॉब, ट्राई टू गो इन दैट कंपनी जहां पर आपको रोटेशन पॉलिसी है, हर 4 महीने 6 महीने में रोटेट किया जा रहा है. एंड अल्टीमेटली आफ्टर 2 years और 3 years यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू रियलाइज कि व्हाट इज समथिंग दैट इज मेड फॉर यू. कोई भी किसी भी आदमी को ऐसा नहीं पता चलेगा कि फर्स्ट डे से मुझे यही करना है और वो हमेशा वही करने लग जाएगा. आफ्टर अ लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, यू विल रियलाइज कि ओके दिस इज योर कॉलिंग एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. नॉट अ सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट would have started practice without let's say doing articleship or working under some other CA. Not a single engineer would have got a job in Google or Microsoft without knowing the knowledge of coding or without talking to someone who is in that department. And not a single entrepreneur would have his first venture as the most successful one. There would be a lots of failures before that successful venture. Again, the point of all these things is that experiment karo, try out karo, do all the possible things and ultimately come up to a conclusion or decision about your career choice, what you want to do ultimately. तो अगर आपको कोई भी confusion होता है about your career choices, about कि ओके इसमें जाना है, फाइनेंस में जाना है, टैक्सेशन, ऑडिटिंग एटसेट्रा, तो जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क एंड यू विल बी एबल टू गेट टू नो कि ओके व्हाट करियर चॉइसेस फॉर यू. सो दैट्स व्हाई एंश्योर कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे और ऐसे डिलेमास आएंगे जहां पर आपको डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव करनी पड़ेगी. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू इंप्रूव योर डिसीजन मेकिंग पावर एज वेल. सो आई होप यू फाउंड सम वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो गाइस. इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, share it with all your friends and subscribe to my channel so that I can create more videos for all of you. And do let me know in the comment section which is the topic you would want me to make the next video on, and I'll ensure कि जो भी comments पे सबसे ज्यादा लाइक है मैं वो टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.